Hello everyone, welcome to PTE Reading and Writing Filling the Blanks Real Exam Question Series. This is 27 video in this series. It means we have already discussed 21 highly repetitive and real exam questions जो आपके पेपर में आ चुके हैं. And in this series we discuss the reading hacks, tips and strategies so that you can achieve your target score, चाहे आपका target score 79 plus हो, 65 plus हो या 58 plus ho. So let's get started. First things first, so now PT is accepted in UK. So if you are going to study, work or settle in UK, you can achieve your dream through PT. And 90% of universities in Canada now accept PT academic. So that is also a beneficial thing for you. अगर आप कनाडा में स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, you can achieve your target score in PT and go to study in Canada as well as PT Home. एक new test start हुआ है PT की तरफ से, which is applicable for spouse and family visas in UK. My name is Bhrat Brij and I have scored a perfect 90 in all the 10 skills of PT, and in this series we discuss reading tips, tricks and strategies ताकि आप भी अपनी reading को crack कर सकें and marks obtain कर सकें. The reason being I do not want you to appear in paper again and again, and Marvel PTE की कोशिश रहती है that you achieve your target score in first attempt. And we post such regular videos on a regular basis, so do not forget to subscribe to our channel. So let's get started with PT reading. It is of 32 to 41 minutes. Integrated section timer hota hai. It has 5 question types, and reading and writing filling the blanks is the first question type in this series, and the most important one because it contributes marks to your reading as well as writing. Now let's see the real scoring of PT. This is the real scoring of PT, where reading module just contributes 47 marks, and us 47 marks में RWFIBs, which are your reading and writing filling the blanks, contribute 22 marks to your reading and 22 marks to your writing. And based on our big data analysis, we have found out that maximum time जो आप spend कर सकते हो in solving your reading and writing filling the blank is 3 minutes. इसमें students सबसे बड़ी mistake क्या करते हैं? They try to read all the words, which is a wrong strategy. And what is the right strategy? That you have to skim it and then you have to attempt your reading and writing filling the blank. All these strategies we teach to our students who take coaching from us online or in institute. So this is today's topic. So as usual, I'm going to give you 30 seconds to skim through this, and then after 30 seconds we are going to discuss this. Okay. So let's discuss now. सबसे पहले you know that we skim RWFIBs to understand the tone. Positive tone है, negative tone है, neutral है, as well as tenses. कौन से tenses use हो रहे हैं? Present tense है, past tense है या future tense है, as well as to understand the gist of the RWFIB कि आपको समझ आए किस बारे में है. So let's get started with the skimming. In partial skeleton remains of ancient women unearthed in Arlington Springs, one of the 8 Channel Islands of the Southern California coast. They were discovered by someone and anthropology and natural history at Santa Barbara Museum of Natural History. The remains of so-called Arlington Springs women were recently reanalyzed by radiocarbon dating and approximately 13,000 years old. A new date makes the remains older than any other known human skeleton found so far in North America. The discovery, popular belief that the first colonists to North America arrived at the end of last ice age about 11,500 years ago, and by a Bering language that connected Siberia to Alaska and northwestern Canada. The earlier date and location of women's remain on the island adds weight to an alternative theory that some early settlers something have constructed boats and migrated from Asia by sailing down the Pacific coast. Okay, so we have now done skimming. अब हमें पता है हमें किसी आर्लिंगटन स्प्रिंग्स वुमेन जिसके आपको
फॉसिल्स मिले हैं, स्केलेटल रिमेन्स मिले हैं, उसकी बात कर रहे हैं। और उस रेडियो कार्बन डेटिंग एक टेक्निक होती है जिससे आप एज फाइंड आउट कर सकते हो। तो उस एज से उनको पता चला दैट इज 13,000 ईयर्स ओल्ड। जो ये डेट आई है या जो स्केलेटन रिमेन्स हैं वो सबसे पुराने हैं, जो कि पहले लगता था कि अप्रॉक्सीमेटली 10,000 ईयर्स अगो नॉर्थ अमेरिका में सेटलर्स आए हैं, राइट, या 11,500 ईयर्स अगो आए हैं, बट वो 13,000 ईयर्स ओल्ड स्केलेटल रिमेन्स हैं। तो इसका मतलब कि कोई थ्योरी है, इसीलिए अब वो चेंज करनी पड़ेगी कि ऑल्टरनेटिव थ्योरी हो सकती है कि कुछ सेटलर्स बोट्स कंस्ट्रक्ट करके एशिया से माइग्रेट कर गए हों। So this is all about this RWFIB and more or less we are talking about the present tense, चाहे हम past की बात कर रहे हैं but यहाँ पे हमारा opinion दे रहे हैं। And if you have attended our grammar rules, you know that opinions are always going to be in present tense. Always remember this because this information is going to come handy. So जब भी आप अपने opinion दे रहे होते हैं, चाहे वो past even के दे रहे हों, it is always going to be in present tense. Okay, so now let's start filling the first blank. Now as per our strategy, we have to just read 4-5 words before the blank and 4-5 words after the blank so that we can understand. You have now a gist, okay, कि किस बारे में है, क्या बात हो रही है। तो बार बार वो पढ़ के आपको नहीं, सिर्फ बार बार पढ़ के आप टाइम वेस्ट ही करोगे। You cannot solve your RWFIB in 2.5 or 3 minutes. अगर आप हर वर्ड को दोबारा पढ़ोगे, you have to pay attention to blanks, the words before blanks and after blanks. 90% of the times आप इन्हीं basis पे blank solve कर सकते हो. Okay, so Arlington Springs women were recently reanalyzed by radiocarbon dating techniques. एक चीज जो आपको याद रखनी है, we use process of elimination, POE, and I call this as best friend forever because हमारे answers बहुत बार process of elimination से find out होते हैं, which means that we keep eliminating the wrong answers and then we are just left with the right answer. So अब अगर एज में कॉन्ट्राडिक्शन पता चली है कि वो 13,000 ईयर्स ओल्ड है, पहले लगता था 10,000 ईयर्स ओल्ड है, तो अगर हम यहाँ पे कंटेक्सचुअल नॉलेज अप्लाई करना स्टार्ट करें, क्या ओल्ड टेक्निक से पता चल रीएनालिसिस होगी? सी इट इज रीएनालाइज, पहले एक बार एनालाइज हो चुकी है। ओके, तो अब अगर आप उसको रीएनालाइज करते हो तो क्या ओल्ड टेक्निक से रीएनालाइज करोगे किसी चीज को? आंसर इज नो. Now the next option is latest. Yes, this can be the answer क्योंकि आप latest टेक्निक से रीएनालाइज करते हो। जब आपने कुछ एक बार चीज फाइंड आउट कर ली है, मतलब जो आपके पास उस टाइम पे एग्जिस्टिंग मेथड थे उनसे आपने फाइंड आउट कर ली, अब आपने दोबारा से कोई नया मेथड आया उसी से दोबारा री फाइंड आउट करोगे। सो दैट्स वाई लेटेस्ट माइट बी द आंसर, बट अभी हम बाकी दो ऑप्शंस को भी देखते हैं एंड अगर हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के उनको एलिमिनेट कर पाए, सो आवर आंसर इज गोइंग टू बी लेटेस्ट. Suspicious radiocarbon dating techniques. अब आप ये बताइए, suspicious हो सकती हैं रेडियोकार्बन टेक्निक्स? अगर आप suspicious हो तो उसको रीएनालाइज करोगे और वहां पे आप थ्योरी, ऑल्टरनेट थ्योरी की बात करना शुरू कर दोगे. दिस इज बिकॉज यू हैव डन फॉरवर्ड रीडिंग, सो यू हैव अंडरस्टूड दैट. अब वो कह रहे हैं कि हाँ, तो आप रीएस्ट करते, वो कह रहे हैं कि हाँ ये तो एक ऑल्टरनेटिव थ्योरी को वे कर रही है या ऑल्टरनेटिव थ्योरी की तरफ पॉइंट आउट कर रही है चीज़, तो सस्पिशियस तो हो ही नहीं सकती. अब डिस्प्यूटेड, द सेम रीजन, आप थ्योरी किसी डिस्प्यूटेड मेथड पे थोड़ी पॉस्टुलेट करोगे. डिस्प्यूटेड मीन्स जब वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपको कि वो रिजल्ट सही दे रही है, कभी सही देती है कभी नहीं देती है, तो उस मेथड पे आप थ्योरीज पॉस्टुलेट नहीं करोगे. सो ओनली ऑप्शन विच इज लेफ्ट इज लेटेस्ट एंड दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑल्सो. And we have filled latest. Now moving to the next blank. The discovery, channels, supports, ways और challenges. अब आप देखिए यहाँ पे सारे आपके एस के साथ हैं, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है. रिमेंबर आई टोल्ड यू. सो अब चैनल्स, सपोर्ट्स, वेज और चैलेंजेस. अब ये जो डिस्कवरी हुई है, कौन सी डिस्कवरी? कि 13,000 ईयर्स ओल्ड हैं उसके स्केलेटल रिमेन. अब एक पॉपुलर बिलीफ था कि फर्स्ट कॉलोनिस्ट, कॉलोनिस्ट क्या होते हैं? जो दूसरे देश से आके लोग एक जगह बस जाते हैं या वहाँ पे रूल करने शुरू करते हैं. जैसे एग्जांपल, इंडिया इंग्लैंड की कॉलोनी थी, ब्राज़ील पोर्चुगीज की कॉलोनी थी. तो इस तरह से, ओके, तो इस तरह से अब आप वो कॉलोनिस्ट हैं. ब्रिटिशर्स वर कॉलोनिस्ट इन इंडिया. सो अब
एक पॉपुलर बिलीफ था कि 11,500 ईयर्स पहले लोग आए थे वहां पे सेटल होने, राइट, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। अब ये डिस्कवरी हुई है कि 13,000 ईयर ओल्ड है, तो क्या वो डिस्कवरी चैनल करेगी? अब चैनल का मीनिंग क्या होता है? चैनल मतलब जब आप एक पर्टिकुलर चीज की तरफ डायरेक्ट करते हो, या पर्टिकुलर, जैसे हम कहते हैं एनर्जी चैनलाइज करनी किसी की, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एनर्जीज का फ्लो करवाना, सो चैनल हो सकता है? नहीं। देखिए यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है कि यार पहले मानते थे कि 11,500 ईयर्स अगो आया है कोई, बट अब जो एविडेंस मिला है लेटेस्ट रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक से, उससे लग रहा है कि 13,000 ईयर्स पहले आए हैं। तो क्या ये पॉजिटिव या सपोर्ट कर सकती है? द आंसर इज नो। चैनल हो सकते हैं? द आंसर इज नो। अगेन वी आर यूजिंग आवर प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। हम रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हैं। वेज क्या होता है? जैसे हम कहते हैं अपने ऑप्शंस को वेज करना, मीन्स जब हम किसी वी असेस द नेचर और इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू अ डिसीजन, कि हम अपने ऑप्शंस को वे करते हैं, मेजर करते हैं या असेस करते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। क्या यहाँ पे आप कोई ऑप्शंस असेस कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, ऑप्शंस को एवेल्युएट कर रहे हो? द आंसर इज नो। सो ओनली वन थिंग इज लेफ्ट विच इज चैलेंजेस, और कंटेक्सचुअली भी ये फिट होगा, क्योंकि पहले हमारी थ्योरी थी 11,500 ईयर्स पहले आए थे, अब हो गया है 13,000 ईयर्स पहले आए थे। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई ना, कि हम जो पहले सोचते थे और जो अब हमें एविडेंस मिला है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी का सिनोनिम क्या है? challenges. Okay, so that's why we are going to fill challenges over here. Now let's come to the next blank. About 11,500 years ago, by something a Bering Land bridge that connected Siberia to Alaska. अब यहाँ पे मोरलेस वर्ड जो यूज हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, उसकी वर्ब की फॉर्म्स हैं, राइट। अब हमारी क्या है? ये ओपिनियन है। पॉपुलर बिलीफ क्या होता है? ओपिनियन। एंड आई टोल्ड यू जस्ट अ लिटिल व्हाइल अगो कि ओपिनियंस आर ऑलवेज इन प्रेजेंट टेंस। सो इफ यू नो दैट रूल, अब आपको पता है, अब आप पास्ट टेंस को एलिमिनेट कर सकते हो। अब क्रॉस है आपके पास, क्रॉस है या क्रॉसिंग है? क्रॉस। अब बाय डूइंग समथिंग हम कैसे बोलते हैं? बाय गोइंग, बाय ईटिंग, बाय स्लीपिंग। तो हम जनरली बाय के साथ क्या फॉर्म यूज करते हैं? आईएनजी की। So more or less, if you know this grammar rule also, and if you are a student online or in institute, you would know all these grammar rules. So that is by crossing. Okay, the right answer is crossing. अब across क्या होता है? एक किनारे से दूसरे किनारे तक। वो सिर्फ किनारे across थोड़ी हुए, एक एंड से दूसरे एंड तक, from one side to the another side या another place, no. So permanently cross हो गई हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? by across भी यू कैन एलिमिनेट। अब आपको कंफ्यूजन हो सकती है क्रॉस और क्रॉसिंग। अगर आप इसको क्रॉस को फिल भी करेंगे, बाय क्रॉस अ लैंड ब्रिज नहीं ग्रामेटिकल सेंस बनाएगा। द बेटर ग्रामेटिकल सेंस विल बी by crossing a land bridge. Okay, so we are going to fill crossing and next move to the next one. Up way to the alternative theory that some early settlers something have constructed boats. Okay, अब अगेन आपको यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच या ग्रामर की नॉलेज बहुत हेल्पफुल रहेगी, बिकॉज ये हैव क्या है? आपकी एक तरह से ऑक्सिलरी वर्ब या वर्ब कह सकते हैं। और यहाँ पे मैजिकली और सरप्राइजिंगली क्या है? एलवाइज में क्या एंड होते हैं? एडवर्ब्स। और जनरली एडवर्ब्स वर्ब्स के बाद आते हैं, वर्ब से पहले नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही स्विम्स फास्टली, राइट, समथिंग लाइक दिस। तो स्विम आपका वर्ब है, फास्टली आपका एडवर्ब है। सो एडवर्ब हमेशा वर्ब के बाद आते हैं। So you can simply eliminate magically and surprisingly just based on that knowledge. Now अब आपके पास है मे और आस्ट। अब वैसे भी आपको एक आइडिया हो जाएगा, जब भी हम थ्योरी पॉस्टुलेट करते हैं हमारे पास एविडेंस नहीं है, इसलिए वो थ्योरी है। थ्योरी इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो एविडेंस से प्रूव नहीं हुआ होता है या कंक्रीट एविडेंस नहीं है। अब थ्योरी में हम क्या करते हैं? प्रपोज। और हम प्रपोज कैसे करते हैं? मे के साथ, राइट। सो मे इज द राइट आंसर, बट आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हो। अब इसको asked को अगर आप यहाँ पे फिल करो, some early settlers asked have constructed boats, the answer is no. कोई contextual या grammatical sense ही नहीं बनती है। The right sense will be early settlers may have constructed boats. Okay,
So now you are going to select May. Now let's see if all the answers are correct. Yes, all the answers are correct. So this is our strategy which you should focus on. We have our strategies based on context, lexical resource, and grammar. We teach all these strategies in detail to our students in our institute as well as for online coaching. So first you need to develop your skimming skills, then you must have the skills for forward reading as well as backward reading. And tone is important to know पॉजिटिव टोन है नेगेटिव है या न्यूट्रल है हम उसी के बेसिस पे अपने ब्लैंक्स को सॉल्व कर सकते हैं देन लेक्सिकल रिसोर्स में collocations की नॉलेज फ्रेजल verbs की नॉलेज vocab की knowledge is important and for grammar we have a complete grammar course of approximately 1 month where we teach our students parts of speech आज आपने देखा एक हमने blank parts of speech के बेसिस पे सॉल्व किया कि ly है adverb है वो verb से पहले नहीं आ सकते generally. Then we teach them subject verb agreement, prepositions, modals, articles, determiners, signposting words, tenses. Because आपको पता है opinions हैं तो opinions हमेशा present tense में होंगे, irregular verbs or plurals, British English rules or sentences. So this is the complete grammar course which we teach to our students. And always remember, you have 2.5 to 3 minutes to solve your reading and writing filling the blanks. In first 30 to 60 seconds, you can skim the content, and in next 90 to 120 seconds, you have to look for clues. You can find pointers and use process of elimination. And always remember, process of elimination is best friend forever for you in PTE reading. And all the strategies which we teach are validated and proven strategies. The proof is in the ticker below. You can see the scorecard of students who have achieved their target score. And these are our recent success stories where students have scored 90 overall, 79, 86, 82. If they can score, you can also score. This is our WhatsApp number 8699121121. And do not forget to subscribe to our channel because we post such informative videos on a regular basis. We give wings to your dreams.